राम राम मित्रों, एक शुभ समाचार है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके एसबीआई द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. The operative directions of this court directed the SBI to disclose the transactions as set out in direction B and direction C extracted above. Let's stop. SBI submits in its application itself that the donor details and redemption details are available, albeit in separate silos. Full stop. In other words, the directions which have been issued by this court require SBI to disclose information which is already available to it. Next para. At this stage, it would be material to refer to the FAQs on electoral bonds published by the SBI, which states that the know your customer documents. हेलो सर, मुझे मेरे एक्स के बारे में पूछना था कि मैं ही उसके बारे में सोचती रहती. सरकारी इंजीनियर बनने की तैयारी को करना है तेज. आ गया है पीडब्ल्यू का न्यू बैच चाणक्य. Must be submitted by the purchaser each time that the bond is purchased, irrespective of whether the purchaser has a KYC verified SBI account. Full stop. That is, वहां फुटनोट दे दीजिए और उसको FAQ क्वेश्चन नंबर 16 जजमेंट से मैं आपको बाद में बताता हूं कहां से लेना है आपको. That is one set of documents, into brackets, the electoral bond application form, KYC documents, and pay in slip can, bracket complete, can only be used to purchase one electoral bond. Full stop. Contributors who have an SBI account, as well as those who do not, have to submit the electoral bond application, know your customer documentation, and proof of payment through NEFT, check, or demand draft. Full stop. Thus, the details of the electoral bonds which have been purchased and which have been directed to be disclosed by this court are readily available. Next. The FAQ, similarly, the FAQs on electoral bonds published by the SBI with respect to the redemption of bonds states that each political party can only open one current account for electoral bond redemption. Full stop. The current account could be opened by the political party only in 4 authorized branches in Chennai, Kolkata, Mumbai, and New Delhi. Full stop. There are 29, factually, nothing turns on that. All right, 29 designated branches. 29 designated branches. Yes. Full stop. They're in the 4 cities or other places also? No, all over the country. All over the country, brother. Not in these 4 places. Thus, information
about a political party's encashment of electoral bonds would be stored only in these branches, which would be clearly accessible. Full stop. Pay slips and other details. Slips and other details would have to be, would have to be submitted to the main branch. Full stop. There is no dispute about the fact, as there cannot be, that this process was duly followed. Full stop. Together with the application which has been filed by SBI for the extension of time, ADR has filed a contempt petition in which it submits that the information which was directed to be disclosed by this court can easily be disclosed by SBI because of the unique number which is printed on the electoral bond. Full stop. Irrespective of whether the unique identification number, which is not discernible to the naked eye, will enable the disclosure of details, the submissions of SBI in the application sufficiently indicate that the information which has been directed to be disclosed by the court is readily available. Next. In view of the above discussion, the miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours, 12 March 2024. Full stop. As regards the ECI, we direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website no later than by 15 March by 5 p.m. on 15 March 2024. Full stop. During the pendency of the proceedings before the Constitution Bench, ECI had, in compliance with the interim orders passed by this court, filed its statements which have been maintained in the custody of the court. Full stop. Copies of the statements which were filed by ECI before this court would be maintained in the office of the ECI. Full stop. ECI shall publish the details of the information which was supplied to this court in pursuance of the interim orders on its website. Full stop. The miscellaneous application. Last month pottery, इस month DJing. अरे यार अगर हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहे तो हर महीने कुछ इंटरेस्ट ट्रेडर्स स्पेशली लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ये रील के अगले 10 सेकंड शायद आपके the SBI
shall file an affidavit of its chairman and managing director on compliance with the directions which have been issued above. Stop. While we are not inclined to exercise the contempt jurisdiction at this stage, bearing in mind the application which was submitted for extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court as set out in its judgment dated 15 February 2024 by the timelines indicated in this order. Full stop. The miscellaneous application for extension of time shall accordingly stand dismissed. Contempt petitions shall stand disposed of at this stage in the above terms. My lord, I just want to say one thing, my lord, because I don't want tomorrow to be again at the end of Mr. Prashant Bhushan's contempt. Your lordships have said disclose B and disclose C. The directions, we will disclose both of that. That is easy. Correlating the purchase with the beneficiary is not something which we are required to do. Then it's easy. That we, so when my lord, the chief justice dictated the order, it is very clear that there is no scope for any confusion in the what is dictated in the court. Lordship. We are grateful. Lordship, one other diary number, which is the contempt of matter related, diary number 11296. Lordship, please stand. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के वकील की एक नहीं सुनी और एक नहीं चलने दी। आई मीन टू से उसके एक भी बहाने को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अगर आप बहस के इन दृश्यों को देखें तो आपको साफ साफ लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी जो है ये एसबीआई के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, जो ये साबित करता है कि एसबीआई भी बिकी हुई है। मीडिया घरानों की तरह एसबीआई भी सरकार के चंगुल में फंस चुकी है और उसके इशारे पे ही काम कर रही है। और एसबीआई के इस व्यवहार, इस कृत्य, इस बहानेबाजी को देखकर मुझे लगता है, अब ये समझ में आता है कि अडानी के 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार के करोड़ के कर्जे इतने आसानी से एसबीआई क्यों दे देता है और आम आदमी को जो है 10-20-50 हज़ार का कर्ज लेने के लिए इन बैंकों के दर्जनों बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनका कर्ज की एक किस्त टूट जाए तो ये जीना हराम कर देते हैं। तो ये कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरी संस्थाएं जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं वेल डन सुप्रीम कोर्ट कहूँगा और कंग्रेचुलेसन दूंगा चीफ जस्टिस CJI चंचूड़ सर को और उनकी पूरी टीम को, संविधान पीठ के उन 5 सदस्यों को देश की जनता की तरफ से मेरा हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा साहसी कदम उठाया है। और मैं सिर्फ इस इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख की बहुत ज़रूरत है ऐसे समय में, जिस समय में देश का लोकतंत्र जो है कराह रहा है, आप कह सकते हैं कराह रहा है, तड़प रहा है। उस समय लोकतंत्र को सांस देने का, ऑक्सीजन देने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के इस निर्णय से एक आस जगी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र की जब हत्या करी जाएगी तो वो सामने खड़ा होगा और बचाएगा उस लोकतंत्र को। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है एसबीआई को उसकी याचिका, समय मांगने की याचिका को खारिज करते हुए, और उसके अनुसार आज लेट इवनिंग तक उसे पूरा डेटा हर हाल में इलेक्शन कमीशन को दे देना है और इलेक्शन कमीशन को 15 तारीख तक उस पूरे डेटा को पब्लिक डोमेन में डाल देना है। तो ये आखिर ये राज क्या है जो छुपाया जा रहा था, जिसको छुपाए जाने की तमाम कोशिशें की गई। एसबीआई के वकील साहब को आप देखेंगे, उनके ये मैं वीडियो डालूंगा, आप देखिएगा उस पूरे बहस को, तो ऐसा साफ साफ आपको दिखेगा कि वो व्यक्ति इतना बड़ा वकील होते हुए भी कितने निचले स्तर का बहस कर रहा है, कितने निचले स्तर की बहानेबाजी कर रहा है। किसको बचाने के लिए आखिर ये साजिश रची गई थी? तो ये स्विस बैंक से काला धन लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी
और टीम भाजपा और भाजपा सरकार ये अपना काला धन दिखाने के लिए नहीं तैयार है, तो ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद आप कर सकते हैं कि स्विस बैंक का काला धन लाएगा। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सरकार कई मोर्चों पे सफल भी रही है लेकिन कई मोर्चों पे असफल भी रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि उचित साधन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनुचित साधन से आप देश को उस मुकाम पे नहीं ले जा सकते। एक तरफ आप गलत कार्य करते रहें, दूसरी तरफ आप अच्छे कार्य भी करें, तो ये संतुलन कभी नहीं बन सकता है कि आप बुरा भी करें और अच्छा भी करें और फिर ये कहें कि आप एकदम से अच्छे हैं। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के इस साहसी कदम की मैं सराहना करूंगा और ये जो संविधान पीठ के जजेज हैं, ये इतिहास में इनका नाम दर्ज होना चाहिए कि इन्होंने इतना साहसिक निर्णय लिया है और एसबीआई की सारी दलीलों को, सारे बहानों को निरस्त कर दिया है और उसे एसबीआई कहाँ 3 महीने का समय मांग रही थी और 17 दिन बाद आके वो कोर्ट में कह रही है कि उसे और समय चाहिए। तो इस पे चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि 17 दिन में आप क्या किए। तो कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला और आपको भी साफ साफ समझ में आएगा कि ये सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा था। ये चुनाव से पहले ये डेटा किसी भी हाल में सामने न आए, इसका अनुचित प्रयास लगातार किया जा रहा था और अगर एसबीआई कर रही थी तो साफ साफ जाहिर है कि एसबीआई सरकार को ही बचाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक बड़ा हिस्सा है, लगभग 95% हिस्सा सरकार को ही मिला है। तो सरकार डर रही थी कि जनता कहीं ये न जान जाए कि ये पैसे उनको किसने दिए हैं और इन पैसों के बदले में सरकारों ने उन लोगों को क्या क्या लाभ पहुंचाया है। इसी डर से चुनाव के पहले ये डेटा पब्लिक में न जाए, इसी डर से सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि ये डेटा सामने न आ पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद आज शाम तक पूरी उम्मीद है कि ये डेटा चुनाव आयोग को मिल जाएगा और इसी महीने 15 मार्च तक पब्लिक डोमेन में होगा। मैं सबसे आग्रह करूंगा, सभी से अपील करूंगा, इस डेटा का अध्ययन करिए, एनालाइज करिए और देखिए किन लोगों ने किन परिस्थितियों में जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और फिर उनके साथ क्या हुआ है, उनको बदले में क्या दिया गया है या किस जांच से, ईडी की जांच से, सीबीआई की जांच से वो बच गए हैं। तो साफ साफ आपको दिखेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो चुनावी चंदे हैं ये हमेशा से भ्रष्टाचार की जननी रहे हैं इस देश में और इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। मैं आगे ये भी कहूँगा कि इस पर कोई एक ऐसा ट्रांसपेरेंट नियम बने कि चंदे का एक एक पैसा जो राजनीतिक दलों को आता है उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए कि कौन लोग इन्हें फंड कर रहे हैं और उसके बदले में ये उन्हें क्या बांट रहे हैं। तो मित्रों, अच्छा दिन रहा लोकतंत्र के लिए कल। सुप्रीम कोर्ट के फिर से उन सारे जजेस की और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर को मेरा हार्दिक धन्यवाद पूरे देश की उस जनता की तरफ से जो लोग लोकतंत्र को पारदर्शी देखना चाहते हैं। तो नमस्कार मित्रों, और अपडेट्स आगे देता रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।